Hello, everybody, and welcome to our live coverage of the Ruma Cup. First up, it's the Gold Cup final between the Millennials and Team Rampagers. News from the center is the Millennials have won the toss and decided to bowl first. The Rampagers won the toss and decided to bowl, and the Millennials opener are in the middle. The umpires are also in the middle. We'll be back to you shortly with some live action. Stay tuned. Welcome back. Umpires Sajjad, Hashmi, and Jawad out in the center. Openers for the Millennials, Basha Sheikh and Partho. And to open the bowling for Team Rampagers, it will be Yogesh Sethi. We are just seconds away from live action. Come on, boys. आवाज बहुत ज़्यादा आ रही है. Umpire Jawad Hashmi signals play and Yogesh Sethi to start proceedings. First ball, oh! Opportunity, but I think the ball landed well in front of the bowler. A very good start. The second ball is short, offside off. Play NM is there. Ball was short enough, but I think batsman couldn't time it well. Time is short well rather. A good start for the Rampagers. Yogesh with the third ball of the over. It's a better length there. The ball bounces unexpectedly more. So another play and miss. Yeah, as the keeper rightly said, 3 different balls to start by Yogesh. Here he comes with the fourth ball of the over. A full delivery, but the line wasn't correct, I feel. Ball is racing towards the boundary and the fielder chasing it gets to it. That good fielding, and the batsmen have time to complete 2. With that couple, Millennials open their account, and Partho also opens his account. This ball I feel was a little bit fuller, and also the line was a little bit straighter, which helped the batsman to flick it for 2. Fifth ball of the over. This time it's short and wide outside off, straight to the point fielder, but he misses it. And the misfield allows the batsman to go for another 2. That's very good running there by the... And no.
They might have been overthrows, but the fielder there at short mid wicket does good. Prevents the batsman from going for two. Short and wide outside of batsman helps him to another two. Score moves to 4. Last ball of the over coming up. It's once again a very good length delivery. A little bit more bounce than the batsman expected, and batsman lets it go to the keeper. With that, we come to the end of the over. So the score after first over is 4 without any loss. Share the new ball with Yogesh is Lavnish, and he'll be bowling to Basha Sheikh, who will be facing for the first time this morning. As I told you before, this is the final of the Gold Cup between the team Rampagers and the Millennials. Basha Sheikh with his first delivery. Shot wide outside off and missed by the batsman. Ball was there to be hit, but the batsman couldn't make use of the opportunity. As the keeper rightly said, Lavnish needs to correct his line a little bit and the length as also. The second ball adds a better line and length. Appeal from the bowler and the keeper, but the umpire not interested. Yeah, that's a very good ball. A little bit on the shorter side, but the bounce, extra bounce which the pitch is offering, helping the bowler. There was an appeal, but I think the ball came off the batsman's hands rather. Next ball, another short and wide one. This time, it's much wider than the umpire likes. So umpire stretches his arms and signals a wide. Extra added to the total, which moves to 5. Damnish with the next delivery. Another short one. Was there bat in that? Yeah, okay, it's a short one. Batsman is asking for extra there, but the leg umpire signals 1 for the over. So it's a legal delivery. Yeah, bowler should be allowed some leeway there, because this game is heavily poised towards the batsman. Next ball from Lamleesh. Another short one. This one, batsman rides the bounce and it's a 4 to the boundary. Very good shot from Basha Sheikh there. And that shot also opens his account. He moves to 4 and the team score moves to 9 without any loss. At batsman now adjusting to the extra bounce in this pitch now. That shot has prompted some field change there. Yeah. Man at sweeper cover has been brought in, and man at point has been moved to the point boundary, deep point I mean. Next ball, short, wide, outside off, and it's a wide. Avnish there losing his line and length a bit. Next ball. It's a little bit fuller at the better length. Yeah, I think there was some change of pace as well there. So the batsman contend with defense. A dot ball. Last ball of the over coming up. Lavnish, right arm over. Shot wide outside of batsman goes for it but misses, and the umpire signals a wide. Another extra added to the total, which moves to 11 now. Steady start by the Millennials so far. Last ball of the over. Another very good delivery, good length ball once again, rising more than the batsman expected. The batsman adjusting well, defends it back to the bowler. That's the end of the second over. After 2 overs, score for the Millennials is 11 without loss. Change in bowling.
After a very good first over, Yogesh gives way to Sri Harsha. Will be bowling right arm over. Then it will be Partho on strike. Harsha with his first delivery. It's an over pitch delivery. Batsman goes for the drive but misses. Yeah, there might be some movement. The air is quite heavy. Overcast conditions, I would say, which might assist the bowlers. So the next ball, another very good delivery. It's in the air. Oh no, but out of reach of any fielders. Great start there by Harsha. Two very good deliveries to the batsman. As I told you, conditions are overcast. It's a good toss to win, but the bowlers have to make use of these conditions. Bowl it as much as full they can, and allow the ball to do its thing. Next ball, another very full delivery. It's in the air towards long on. It batsmen have time to complete two. The score with that 2 moves to 13 without loss. That's good bowling there from Sri Harsha. This ball is being played in the air. Next ball, another full delivery. This time batsman is up to the pitch of the ball and drives his hands only for a 4. Folder did well there. Made a ground but just couldn't complete the fielding. I think it was a bit, to be fair to the fielder, it was a bit far from him. Nonetheless, full marks for the effort. Very good shot from Partho there. Reached, good footwork as well. Reached the pitch of the delivery and drove it towards the cover region. Wide off, long off, yeah, between the super cover and mid off there. Yeah, Harsha so far has been on the fuller side. Let's see what he does with his fifth delivery. And a very good shot there once again. Working the ball into the onside and taking a single. Good sensible batting there from Partho. After a boundary, he just placed the ball in the gap and taken a single to get off strike and give Basha the strike. With that single, score moves to 18 without loss. Last ball of the over coming up. It's another full delivery. Basha goes for it but straight to mid off. On the one. It's a dot ball. With that, it's the end of the third over. Score remains on 18 without loss. A steady start for the Millennials, but Team Rampagers would also be quite satisfactory with this start, but they would have preferred a wicket or two to go with. Millennials haven't got off to a flyer. It's just 18, 6 and over. Yogesh Sethi to continue. Fourth over of the innings. First ball. Very good shot there. You can't bowl the batsman on his legs on these pitches. That's a 4. Second boundary of the innings. This time from the bat of Partho. In fact, this is the third boundary of the innings. And second boundary for Partho. It was a very good shot, good length ball, but the line was a little bit straighter on the batsman's legs, and he flicks it between the fielder at short fine leg and short mid wicket for another boundary. Batsman wasn't ready, I think. Second ball of the over, Yoga. Short one, straight to the man at short fine. No run there. Non-striker was interested, but striker Partho never moved.
So dot ball. Third ball of the over. Oh, bowler this time loses his line, bowls it way down the leg side. Umpire signals an extra. Score moves to 23. Yogesh Sethi comes in, right arm over. Shot right outside of ball is in the air, but the fly. Oh no, that was an opportunity. Fielder at point, lets it go. Put back in there by the man at short mid wicket, prevents any extra. And a chance goes down. Ball was hit straight to the man at point, but he just lets it through. Next ball from par. Another short and wide one. This time the ball bounces in front of the point fielder. He does well this time to prevent any run. It would be very harsh on the fielder to call this one an opportunity because the ball bounced well in front of him. But he did very well to stop the ball. In fact, he didn't concede any run. So Badshah Sheikh will be on strike. Next ball from Yogesh. This one is in the air. Keeper is coming underneath it. Oh no, that goes down. Second catch of the inning goes down. And the Millennials still without loss. Keeper with the gloves on went for this one, but never judged it. Should have been taken. The first wicket should have been down. Unfortunately for the Rampagers. Pad, full toss on the pads, timed very well. Ball is running towards the boundary. A 4. That was a gift. A full toss on the pads. And Partho making full use of it, sending the ball to deep backwards leg boundary. With that boundary, score moves to 29 at the end of 4 overs. So now this is a good start for the Millennials. There were a couple of opportunities in this over, but fielders just couldn't stick to it, just couldn't hold on. Another change in bowling. Bharat Sethi coming into the attack. He'll be bowling to Badshah Sheikh, sorry. Fifth over of the inning. Bharat Sethi, right arm over. Shot outside off, and that's an excellent shot. Another boundary to Badshah Sheikh. It was there to be hit, and Badshah Sheikh made full use of the opportunity. Cracking shot through the point region for 4. In fact, it was timed so well that none of the fielders had a chance to move. Man at point goes and retrieves the ball and returns to the bowler. That shot has brought in a change. Matted shot fine as moving to the offside. Oh, the offside is strengthened after that shot. Bharat Sethi with the second ball of the over. That's a better line and length. Appeal there, slight appeal, but I think there was no connection between the ball and bat. So, umpire remains unmoved. Bowler, Bharat Sethi giving instructions to his fielder. Third ball of the over. Once again, short and wide, and that's an excellent shot. Another excellent shot for another boundary. If you keep bowling this line and length, n number of fielders won't be enough on the offside. Because this is short, wide, outside off, asking for trouble. The line has to be a little bit closer to the stumps, and length, I think length is also a bit on the shorter side. He has to pitch it further up. Next ball of the over. That's better line and length. But again, once again, it's another 4.
Batsman is lining Bharat Sethi very well there. Is picking up the pace of the ball, line of the ball, and putting it into the gaps. That's a very good over for the Millennials. 3 boundaries of the first 4 deliveries. And I think though all the boundaries have came of similar balls, short and wide outside off, giving the batsman the freedom and batsman making full use of that. Another change in fielding. There's a deep point in place now. Man at sweeper cover has moved into short cover. Bharat Sethi, fifth ball of the over. This time it's wide down the leg. Umpire signals next another extra. Score moves to 42 without loss. Fielders cheering Bharat up. Bharat with the fifth delivery of the over. Another short and wide one, but this time the batsman doesn't time it that well. It's only a single. Bharat gets away with it because this was another delivery which was short and outside off, but maybe there was hint of movement, ball coming in towards the batsman, which made the batsman lose his timing. Last ball of the over coming up. But ball is in the air, but it lands between 2 fielders. Another opportunity goes down. But this time I think the ball was between 2 fielders, not in any fielder's hands, not in any fielder's reach there. That's the end of the over. At the end of 5 overs is 44 without loss. So a swift start for the Millennials. This over 15 runs, an expensive over to start by Bharat Sethi. So the start has now gone in favor of the Millennials because they haven't lost any wicket and it's already 44 on the board. अगला ओवर लवनीश, पारी का छठा ओवर, पहली गेंद बहुत अच्छी, बढ़िया गेंद, गुड लेंथ गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर 5th स्टंप लाइन पर बैट्समैन बीट हो गए. दूसरी गेंद थोड़ी सी फुल, लेकिन ग्राउंड ड्रिवन डाउन द ग्राउंड, सीधे मिड ऑफ के फील्डर के हाथ में, रन बनाने का कोई मौका नहीं. दूसरी डॉट बॉल इस ओवर की. लवनीश स्लिप फील्डर को शॉर्ट थर्ड मैन पर करते हुए, ये तीसरी गेंद बहुत अच्छी, बढ़िया गेंद, भरत नहीं पहुंच पाए, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन. अच्छी बढ़िया टाइमिंग, ऑन ड्राइव थी ये. गेंद ने भरत को पूरा बाउंड्री लाइन तक टीज किया और फिर क्रॉस कर गई बाउंड्री लाइन को 4 रन के लिए. इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर हो गया 48-48 बिना किसी नुकसान के. लवनीश की अगली गेंद शॉट, फिर से हवा में गेंद, कीपर इस मर्तबा बॉल के नीचे, और इस मर्तबा कीपर ने ये कैच लपक लिया. बहुत अच्छा कैच कीपर द्वारा, वेल जज्ड कैच. इस तरह से टीम मिलेनियल्स की पहली विकेट का पतन. पार तो आउट हुए 25 रन बनाकर केवल 19 गेंदों में 4 बाउंड्रीज की मदद से. कीपर मोइन, बॉलर थे लवनीश. बॉल थोड़ी सी छोटी थी, लेकिन उतनी भी छोटी नहीं थी कि बैट्समैन पीछे जाकर इसे पुल कर सकते थे. लेकिन फिर भी बैट्समैन अपने शॉट रोका नहीं अपने शॉट को. वेंट थ्रू विथ हिज शॉट, टॉप एज सीधे हवा में चलेगी और मोइन, कीपर मोइन ने इस मर्तबा कोई गलती नहीं की. तो पहला नुकसान मिलेनियल्स को. स्कोर 48 रन, 1 विकेट. नए बैट्समैन है
राम समल्ला जो कि बेहतरीन बैट्समैन है। पिछले मैच में हमने देखा था एक मैन ऑफ द मैच वाली इनिंग्स खेली थी इन्होंने। बड़े हिट्स के लिए जाने जाते हैं। इनका अपना निजी स्कोर अधिकतम हाईएस्ट स्कोर जो है वो 90 है, 90। मिलेनियल्स को आज फाइनल में राम की तरफ से एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी। राम अगर खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, बड़ी पारी खेलते हैं तो मिलेनियल्स एक विशाल स्कोर खड़ा कर पाएगा। अगली गेंद, शॉट, ओ प्ले एंड मिस। राम, हे राम। ये बैट्समैन फिर से शॉट और फिर से प्ले और मिस। इस तरह ओवर समाप्त। 6 ओवर के बाद स्कोर है 48, 1 विकेट के नुकसान पर। नए बैट्समैन शायद राम नहीं है। एक और बॉलिंग चेंज, शशांक आए हैं बॉलिंग करने के लिए। शशांक का पहला ओवर, इस पारी का 7वां। राम नए बैट्समैन जो हैं वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे असल में, अब स्ट्राइक पर हैं। अपनी पहली गेंद का सामना करेंगे शशांक, राइट आर्म ओवर द विकेट। अपनी पहली गेंद के साथ फुल गेंद, सो ऑन। ये का स्पेक्टेटर्स कैच था लेकिन बॉलर ने नहीं पकड़ा, कोई नुकसान नहीं। बहुत ज़्यादा फुल थी ये गेंद। राम जो कि अभी अभी विकेट पर आए हैं, अच्छी तरीके से उसको टाइम नहीं कर सके और सीधे बॉलर के हाथ में खेला। शशांक की अगली गेंद, ये बेहतर गेंद, लेकिन लाइन थोड़ी सी और बेहतर करनी होगी शशांक को, क्योंकि ये बैट्समैन के पैड्स पर थी और इंडियन बैट्समैन, हिंदुस्तानी बैट्समैन पैड्स पे अगर आप गेंद करेंगे तो आपको बख्शेंगे नहीं। अगर थोड़ा सा गैप में खेलते राम तो ये शायद चौका भी होता, लेकिन सीधे अनिल के हाथ में खेला जो कि फटनट पर है। तीसरी गेंद ओवर पिच, बॉल पड़ने के बाद अंदर आई। बादशाह शेख ड्राइव करने चाहते थे लेकिन कंप्लीटली मिस कर दिया, डॉट बॉल। तो अच्छा स्टार्ट शशांक द्वारा। पहली 3 गेंदों में केवल 1 रन। शशांक अगली गेंद, चौथी इस ओवर की, शॉट ऑफ स्टंप के बाद सीधे हाथ में थी पॉइंट के फील्डर के। आई थिंक ये फिंगर टिप्स पे लगी फील्डर के। 4 रन। ये मिस फील्ड बहुत ही महंगा साबित होता हुआ। जो गेंद कैच होनी चाहिए थी वो बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई है और मिलेनियल्स के स्कोर में 4 रन का इजाफा। इस चौके के साथ 53 स्कोर हो गया, 53, 1 विकेट के नुकसान पर। शशांक अपनी अगली गेंद के साथ थोड़ा सा फील्ड चेंज करते हुए थर्ड मैन को अंदर बुला रहे हैं और जो पॉइंट का फील्डर था उसे पीछे भेज रहे हैं। अब ऑफ साइड डीप में 2 फील्डर्स हैं, एक डीप पॉइंट और एक स्वीपर। शशांक अगली गेंद, ये फुल टॉस और एम्पायर का इशारा नो बॉल, क्योंकि ये वेस्ट हाइट से ऊपर थी। फ्री हिट कमिंग अप। बादशाह शेख फ्री हिट का क्या फायदा उठाते हैं। एक और फुल टॉस लेकिन मिस कर दिया बादशाह ने।
बॉल उनके पैड्स की अंदरूनी किनारा लेकर उनके पैड्स से टकराई और स्क्वायर लेग रीजन की तरफ चली गई। डीप स्क्वायर लेग के फील्डर ने अंदर आकर फील्ड की और बॉल रिटर्न की कीपर को 1 रन। तो ये कुछ खास फायदा नहीं उठा सके बादशाह शेख फ्री हिट का। आखिरी बॉल ओवर पिच ड्रिवन डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ की तरफ, जहां पर योगेश हैं फील्ड की और बॉल फेंकी बॉलर को। ओवर समाप्त। आखिरी बॉल से आए 1 रन। स्कोर बढ़कर हो गया 56। 1 विकेट नुकसान। लवनीश कंटिन्यू करेंगे। लवनीश का ये तीसरा ओवर, पारी का 8वां ओवर। लवनीश जिन्होंने अपने पिछले ओवर में 1 विकेट ली थी मिलेनियल्स के ओपनर पार्थो की, जो कि अब तक गिनने वाली मात्र विकेट है। लवनीश पहली गेंद ओवर पिच ऑन ड्राइव, लेकिन उतनी अच्छी टाइमिंग नहीं। बैट्समैन दूसरे रन के लिए भागते हुए और आसानी से पूरा कर लेंगे। बढ़िया रनिंग, बहुत ही बढ़िया रनिंग बादशाह शेख द्वारा। बादशाह जो कि डेंजर एंड पे आ रहे थे, उन्होंने प्रोत्साहित किया राम को दूसरे रन के लिए और आसानी से पूरा कर लिया। लवनीश की अगली गेंद, दूसरी इस ओवर की, थोड़ी सी लाइन से भटके पैड्स पे डाले थे, बैट्समैन ने मिस कर दिया। ये शायद उनके पैड्स को छू कर गई है गेंद, इसीलिए एम्पायर का कोई इशारा नहीं, यानी ये लीगल डिलीवरी है। मिस कर दिया बैट्समैन ने एक मौका रन बनाने का। लवनीश की तीसरी गेंद, शॉट आउटसाइड ऑफ। राम इसे खेलना चाहते थे पॉइंट बाउंड्री की तरफ, लेकिन बॉल और बल्ले और गेंद के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ। एक और डॉट बॉल। अगली गेंद लवनीश की, ये फुल टॉस, लेकिन लेग स्टंप के काफी बाहर। कीपर भी इसे क्लीनली कलेक्ट नहीं कर पाए और वाइड का इशारा एम्पायर द्वारा। 1 वाइड और 1 एक्स्ट्रा रन, 2 और रन खाते में मिलेनियल्स के। स्कोर बढ़कर हो गया 60 रन, 60 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। लवनीश की अगली गेंद, शॉट आउटसाइड ऑफ। बेहतरीन कट शॉट, वहां पर डीप फील्डर मौजूद है जिन्होंने फील्ड किया और कीपर को बॉल थ्रो किया। 1 रन बैट्समैन के लिए। बादशाह अच्छा टाइम कर रहे हैं आज बॉल, और बॉलरों ने भी उन्हें उनकी स्ट्रेंथ पर फीड किया है शॉट और आउटस्टंप के बाहर। ये अगली गेंद हवा में लॉन्ग ऑफ की तरफ, नहीं, लेकिन ये काफी शॉर्ट थी, फील्डर से काफी पहले टप्पा खा गई गेंद, तो ये कैच नहीं था। मैं नहीं समझता ये कैच था। अच्छी फील्डिंग लॉन्ग ऑफ के फील्डर द्वारा। योगेश है लॉन्ग ऑफ पर। लवनीश अपने तीसरे ओवर की आखिरी गेंद के साथ स्लोवर 1 ऑटसम के बाहर, कीपर ने भी इसे मिस कर दिया है। बैट्समैन भाग रहे हैं, लेकिन बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई है और एम्पायर का इशारा 4-22। ऑकवर्ड बाउंस हुआ शायद ये कीपर के सामने। 4-22 के साथ ओवर की समाप्ति। 8 ओवर के बाद स्कोर 66 रन, 1 विकेट का नुकसान मिलेनियल्स ने अब तक बर्दाश्त किया है। एक और बॉलिंग चेंज, अनिल बॉलिंग में आ रहे हैं। अनिल जो कि ऑफ ब्रेक बॉल करते हैं, फिंगर स्पिनर है। पिछले मैच में इनका बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा था, कुछ 2 या 3 विकेटें भी इन्होंने ली थी। अच्छे वेरिएशंस का इस्तेमाल करते हैं, देखना है आज क्या कर पाते हैं। रैम्पेजर्स को विकेट्स की दरकार है, क्योंकि अगर इसी रन गति से रन बनाते रहे मिलेनियल्स तो 160 तो आसानी से बना लेंगे, और शायद स्लॉग ओवर्स में थोड़ी अगर और तेज गति से रन बनाएं तो 180 तक भी स्कोर को पहुंचा सकते हैं। तो विकेट्स लीड ऑफ द आवर है
रैम्पेजर्स के लिए। अनिल अपनी पहली गेंद के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट। ये शॉट और बैट्समैन के बाद बहुत टाइम था, बैट्समैन पीछे गए, पुल किया डीप मिड विकेट की तरफ जहाँ के फील्डर तैनात है। फील्डर ने फील्ड किया और बॉल वापस की अनिल को। थोड़ा सा मैं अभी भी मॉइस्चर है इस विकेट में। अनिल शुरुआत कुछ ठीक नहीं, तो शॉर्ट बॉल से शुरुआत की इन्होंने। अगली गेंद, ये बेहतर गेंद, बैट्समैन को इंतज़ार करना पड़ा बॉल के आने का। गेंद जब बैट्समैन के पास आई तो हल्के से हाथों से इसे फाइन लेग की तरफ खेल दिया और एक और रन। ये बेटर बॉल थी अनिल की। ये ओवर पिच्ड तो नहीं कहूँगा, लेकिन अच्छी फ्लाइट थी। इस तरह से बॉलिंग करनी होगी, बैट्समैन को ललचाना होगा बड़े शॉट्स खेलने के लिए। बॉल जब हवा में जाएगी तभी मौके बनेंगे विकेट्स के लिए। राम की विकेट तलाश कर रहे होंगे रैम्पेजर्स, लेकिन ये शॉर्ट बॉल मिस कर दिया कीपर ने। बैट्समैन आगे आ गए थे, शायद स्टंपिंग का मौका था, लेकिन कीपर ने बॉल कलेक्ट ही नहीं की। अच्छी गेंद अनिल की, बैट्समैन को शायद देख लिया था आगे बढ़ते हुए। अगली गेंद इस मरतबा फुल, ये बॉल हवा में है, देखना है फील्डर ले पाते हैं या नहीं। बहुत ही बढ़िया कैच, वेल जज्ड कैच। ये राम बहुत नुकसान पहुंचा सकते थे रैम्पेजर्स को। अनिल की बेहतरीन बॉलिंग, उन्होंने पर्याप्त हवा दी, ललचाया बैट्समैन को। बैट्समैन शॉट, बड़ा शॉट मारने के लिए गए, गेंद हवा में और लवनीश ने एक बेहतरीन वेल जज कैच लिया। इस तरह राम सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन वापस जाते हुए। बहुत ही बड़ी विकेट ये रैम्पेजर्स के लिए और बड़ा नुकसान मिलेनियल्स के लिए। राम अगर विकेट पर ज़्यादा देर रुक जाते तो बहुत आसानी से तेज़ी से स्कोर बढ़ा सकते थे, लेकिन आज शायद राम का दिन नहीं। राम केवल 6 रन बनाकर पवेलियन वापस और मिलेनियल्स की दूसरी विकेट का पतन। रैम्पेजर्स सेलिब्रेट करते हुए इस विकेट को, क्यों ना हो। एक बड़ी विकेट अलिन ने हासिल की है, बढ़िया बॉलिंग चेंज और एक टाइमली विकेट। इस विकेट के साथ स्कोरिंग रेट को थोड़ा सा शायद रैम्पेजर्स चेक कर सकते हैं, यानी कंट्रोल कर सकते हैं। नए बैट्समैन राम की विकेट के गिरने पर जो नए बैट्समैन आए हैं वो है रमनदीप अकुला, जिनका भी काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। 100 से ज़ायद मैचेस खेल चुके हैं, 1100 से अधिक रन बनाए हैं और इनका निजी स्कोर, अधिकतम निजी स्कोर है 78। अनिल की अगली गेंद शॉट ऑफ स्टंप के बाहर स्पिन होकर अंदर आई। बैट्समैन ने इसे खेल दिया लॉन्ग ऑन की तरफ, जहां पर भरत सेठी तैनात हैं। इन्होंने फील्ड किया और गेंद को रोल कर दिया बॉलर अनिल की तरफ। एक अच्छा स्टार्ट अनिल द्वारा, 5 गेंदों में 3 रन खर्च किए हैं और एक राम की बहुत बड़ी विकेट इन्होंने हासिल की है। अनिल की अगली गेंद इस ओवर की आखिरी, फ्लाइटेड गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद। रमनदीप कुछ खास इस गेंद से कर नहीं पाए, खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद आकर उनके पैड से टकराई और एक और डॉट बॉल। इस तरह 9वें ओवर की समाप्ति। एट द एंड ऑफ 9 ओवर्स स्कोर है 69, 2 विकेट के नुकसान। एक और बॉलिंग चेंज, किशा रेड्डी बॉलिंग के लिए आए हैं। ये इस पारी का 10वां ओवर है।
किस्टा रेड्डी बॉलिंग करेंगे बादशाह शेख को। बादशाह जिन्होंने मिलेनियल्स की पारी का आगाज़ किया था, अभी तक विकेट पर डटे हुए हैं। 26 रन बनाए हैं 24 गेंदों में। ये फुल टॉस, लेकिन बादशाह फ़ायदा नहीं उठा पाए। सीधे लॉन्ग ऑन फील्डर के हाथ में खेल दिया और केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बादशाह को। फुल टॉस को जहां चाहे वहां भेज सकते थे, लेकिन सीधे लॉन्ग ऑन के हाथ में मार दिया, जहां पे भरत सेठी मौजूद। किस्टा रेड्डी अपनी अग्नि गेंद के साथ एक और फुल टॉस। नहीं है, फुल टॉस तो नहीं थी, लेकिन काफ़ी फुल थी ये गेंद, जिसे रमनदीप ने कवर रीजन में ड्राइव किया और एक और रन। बढ़िया 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 किस्ता। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर हो गया 71 2 विकेट के नुकसान पर। रन रेट 8 से नीचे आता हुआ। किस्टा रेड्डी की अगली गेंद अबॉट किया अपना रन अप, दोबारा स्टार्ट लेंगे। किस्टा रेड्डी भी ऑफ ब्रेक करते हुए एक और हवा में शॉट। नहीं, बॉल ने, बैट्समैन ने कोई संपर्क ही नहीं किया बॉल के साथ। बॉलर अच्छी बॉल किस्टा रेड्डी की, वेल फ्लाइटेड डिलीवरी। बैट्समैन बड़ा शॉट खेलने गए बादशाह शेख, लेकिन गेंद गई विकेट कीपर मोइन के हाथों में। किस्टा रेड्डी अगली गेंद, फिर से एक फ्लाइटेड डिलीवरी, बॉल फिर से हवा में है। 6 रन। बहुत अच्छी कोशिश भरत सेठी की, लेकिन हमें ये बॉल बादशाह ने अच्छी तरीके से टाइम किया था। जस्ट इवेडिंग द फील्डर, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। हाथों को छू कर चली गई गेंद भरत के, और एम्पायर का इशारा 6 रन। इस 6 रन के साथ बादशाह का निजी स्कोर बढ़कर हो गया 33 और टीम का स्कोर हो गया 77 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी फ्लाइट के साथ बॉलिंग कर रहे हैं किस्टा रेड्डी। अगली गेंद, ये फुल टॉस। अच्छी फील्डिंग पॉइंट के फील्डर द्वारा। ये शायद आउटसाइड एज थी, क्योंकि बैट के बीचों बीच से नहीं आई थी ये गेंद। टाइमिंग भी उतनी इसमें थी नहीं, तो फील्डर ने अच्छी कोशिश की और बैट्समैनों को 1 रन पर रोका। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर हो गया 78 रन 2 विकेट के नुकसान पर। किस्टा रेड्डी की अगली गेंद, फिर से फ्लाइटेड डिलीवरी, स्पिन होकर अंदर आई गेंद। बैट्समैन बीट हो गए, कीपर ने कलेक्ट किया और वापस। ओवर समाप्त। 10 ओवर के बाद स्कोर 78 2 विकेट के नुकसान पर। 10 ओवर के बाद एंड्स चेंज होंगी। ड्रिंक्स ब्रेक, एम्पायर का इशारा। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे।
Welcome back after the break. Anil to continue. It's a pleasant weather out there, though it's summer, so overcast conditions. Rampagers have made a comeback, picked up 2 quick wickets there. One of that of Ram Samala. Anil to continue right above the wicket from the other end as well. Shot outside off, and well, it was too far outside off. The umpire signals a wide. Score moves to 79 for the loss of 2 wickets. This was short, and I don't think there was enough air in that ball as well. That's better. Good fielding there by the man at short mid wicket. No run. Still, Anil a little bit on the shorter side. Needs to pitch it further up. Faster one once again. Batsman goes back, rocks back, and pulls it towards deep mid wicket. Misfield there gives the batsman opportunity to come back for the second. Yeah. Fielding, loose fielding there a little bit. Anil has been very short this over. That's an inside edge, but there is a short third man in place, so no damage done, though the keeper missed the ball. But the inside edge went straight to the ground, so keeper had very little chance there. Anil with the next delivery. Again, shot. And the batsman. No. That's a 4. Overran and fielder at deep backward square leg there. Overran the ball and missed it completely. So, boundary there for Basha Sheikh. With that boundary, Basha moves to 40 of just 32. The team score moves to 85. Anil has been on the shorter side this over and not flighting the ball as well. Once again, shot outside off. It's flat. I don't know why, but Anil is darting the balls at a good pace this over, not giving it any air or flight to deceive the batsman. Once again, shot outside off, and on pace delivery played to deep mid wicket for another single. That's the end of the over. With that single, score moves to 86. 11 overs. 2 wickets down for the Millennials. Anil bowled a beautiful over from the other end first up, giving the ball ample air and every opportunity to spin. Has bowled an over full of darts from this end. Maybe a short boundary on the onside forced him to bowl those darts. Not sure, but you can try at least. Another bowling change. Harish Kumar has come into the attack. He will be also bowling off spin. Starts off with a wide down the leg side. No signal from the umpire there. Maybe the ball touched the batsman's pads. Next ball from Harish. Shot outside off. Misfield and a boundary. Unfortunate for the bowler there. This is the second misfield from this end from the fielders in the deep mid-wicket region there. Not sure what the issue is, but the fielder has misfielded second time from this end in the same region. Next ball, another short ball headed along towards the fine leg boundary. A fielder does well to reach the ball and throw it back to the keeper. The batsman has time for 2 there. Nice shot. Just making use of the pace of the bowler and giving the ball direction
because there's no one there in the fine leg region. Man from third man, short third man, had to run all the way to deep fine leg and field the ball. Harish with the next delivery. Another shot outside of batsman going for the cut, but misses it completely. Basha has moved to 47 with a boundary and a couple from this over. Yeah, men in dugout cheering for Basha, who's on 47. Harish with the next delivery. This one is a full toss. Once again driven round the ground to long on. Bharat there at long on does well and keeps the batsman in check. Just a single. Ramandeep now on the strike for the last ball of the over. Last ball. A better line and length there outside of. Good length ball. And batsman gives it due respect. Defends it down the ground towards the bowler. Dot to end the over and score remains on 93 for the loss of 2 wickets. Krishna Reddy to continue his second over. Some discussion there between the two bowlers and the keeper. Two bowlers, Harish Kumar and Krishna Reddy, and the keeper Moin. Moin shadow practicing there. Let's see if he gets an opportunity of stumping this over. Krishna Reddy to continue. First ball of his second over. A well-flighted delivery, a full toss in fact. Batsman plays it towards sweeper cover and ball goes towards boundary. 4 runs. Wasn't timed as well, but the batsman fielder in the deep was a lot squarer. So with that 4, Basha brings up his half century, moves to 52 of just 40 deliveries. Very good batting there from Basha, making full use of the opportunities which have been presented to him. Next ball, shot outside off, but this time he doesn't make use of the opportunity. A ball might have been spinning in. Yeah. Wanted to cut, but the ball went to the super short cover fielder there. Yeah, that's a better length delivery. A little bit short, but still good delivery nonetheless. Cut towards point and a single taken. Yeah, Krishna Reddy should be concentrating on that line. Ball can be a touch fuller, but that's the line to bowl. Ball is in the air. No question of catching it. It's got way over the long on boundary for a 6. Excellent timing for Basha there. He has been in for quite some time now and seeing the ball like a football. Umpire has asked for a new ball. Yeah, a new, not a new cherry, but a semi-new ball, an old ball, a used ball. The ball is out into the field. That was an excellent shot there from Pasha Sheikh. It went straight like an arrow and no chance for any fielder because it was a 6. It sailed over the boundary. Krishna Reddy, another very full delivery, but this time shot wasn't as good as the previous one. Ball was in the air, but not in any fielder's reach. So the long on fielder Bharat Sethi mops up and returns it to the bowler. Last ball of the over coming up. Another well-flighted delivery. Oh, that's an excellent shot.
Oh, sorry, I'm sorry. That an excellent ball there. Nice flight. Ample air given to the ball. Ball spins past the batsman. Appeal for a stumping there, but the leg umpire was never interested. Yeah, the last ball of the over. A dot. At the end of 13 overs, the score is 106 for the loss of 2 wickets. Kishta Reddy bowled a very good over, but it was expensive. 13 runs came of it. I think he gave it a little bit air, enticing the batsman to go for big shots. Unfortunately for him, batsman timed those shots very well, and one ball sailed over the long on for 6, and one went towards the cover boundary for a 4. Those weren't bad balls actually. Another bowling change, Hemant Shilukuri coming into the attack from over the wicket. He'll be bowling leg breaks. So change. First ball outside of. That's a good start. Full delivery. Driven straight back to the bowler. Dot to start by Hemant. Second ball, another very good delivery. Batsman a little bit on the shorter side, gives the batsman time to adjust, but still batsman just hits it straight to the man at short cover. Second dot of the over. Next delivery, ball is in the air but in the gap as well. It's running towards the cover boundary. Man at sweeper cover does well to field till the time he returns it. Batsman has chance to complete 2. That 2 score moves to 108 for the loss of 2 wickets. Pacha moves to 60. Next ball of the over. Another short one. Oh no. Good change there. He bowled 3 leg breaks and then a slider. He just went straight to the keeper. Use of the feet there by Badshah and driven handsomely to the man at sweeper. Only a single this time because the ball was timed too well and reached the fielder very quickly. So no question of 2 there. Another single added to the total, which moves to 109. Last ball of the over coming up. Short, wide, played back to the bowler who does well in his follow through and prevents any chance of a run. That's the end of the over. At the end of 14, it's 109 for 2. 6 overs remaining, and Millennials would be looking for at least 50 to 60 runs of the remaining 6 overs. With 2 well-set batsmen in, it's quite possible. Let's see. Anil back into the attack with his 3rd over. He'll be bowling right arm over and off breaks. Badshah on strike was moved to 63. Anil with the first ball of the 15th over. That's a good start. Good length delivery, outside off. Though there was room for the batsman, but the length wasn't short enough for the cut. Next ball, it is little bit short. Shorter than the first ball, so the batsman rocks back and cuts it. The man at sweeper cover. Another single, which brings Ramandeep Akula on strike. Ramandeep a little bit cautious because Badshah has been going well from the other end. Well flighted delivery. Ball is in the air, but well
shot of the man at long on. Another single to the total. That's good bowling from Anil this over. Not darting it in, giving the ball air, some air, allowing it to spin. Yeah, use of the feet there. Ball is in the air, but falls in no man's land, and batsmen have time to come back for the second. Yeah, as I told you, this over Anil has been bowling well. In this occasion, deceived the batsman in air. Batsman went through. Basha Sheikh went through with his shot. 2 more runs to the total. Ball was in the air but fell in no man's land. Basha there looking exhausted. Has been running a lot. Another well-flighted delivery. Use of the feet there, and it's a 4. Good placement there from Badshaw between the man at long on and deep mid wicket. Another 4. With that, Badshaw moves to 70 and the team score moves to 117 for the loss of 2 wickets. So, good footwork there from Badshaw enabled him to make it into a full toss and place it in the gap. Last ball of the over. Another full toss. Ball is in the air but once again in no man's land. Man at long on, Bharat Sethi charges in and throws it quickly back to the bowler Anil. That single. We come to the end of 15 overs. Score is 118 for the loss of 2 wickets. So as I told you, Badshaw looks a little bit exhausted. Has asked for drinks. 12th man is in with some drink and some messages as well. पंद्रह ओवर के अंत पर स्कोर 118 रन 2 विकेट के नुकसान पर बादशाह शेख का ओपन जिन्होंने ओपन किया था इनिंग्स को अभी तक विकेट पर जमे हुए हैं और हेमंत चिलकुरी अपने लेग ब्रेक्स के साथ कंटिन्यू करेंगे। पहली गेंद इनसाइड एज अनिल जो कि शॉट फाइन लेग पर तैनात है उन्होंने फील्ड किया। अनिल थोड़े से स्लो थे शायद। बैट्समैनों ने 1 रन पूरा कर लिया। 6 रन के साथ स्कोर बढ़कर हो गया 119। हेमंत की अगली गेंद वेल फ्लाइटेड डिलीवरी और बैट्समैन ने इसे ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ की तरफ और स्कोर में 1 और रन का इजाफा। स्कोर बढ़कर हो गया 120 रन। हेमंत बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए बॉल को अच्छे तरीके से फ्लाइट दे रहे हैं, एयर दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं स्पिन करने का। ये अगली गेंद रिवर्स स्वीप लेकिन फील्डर वहाँ पे तैनात फील्ड किया और बॉलर को बॉल वापस किया। केवल 1 रन। रिस्की शॉट मैं नहीं समझता ये रिस्की शॉट था क्योंकि बॉल ऑप्शन के बाहर थी। हेमंत की अगली गेंद फिर से बेहतरीन गेंद। बैट्समैन चकमा खा गए थे लेकिन कीपर ने मिस कर दिया। ये शायद स्टंपिंग अपॉर्चुनिटी थी। बॉलर के रिएक्शन से ऐसा लगा। अगली गेंद फिर से कदमों का इस्तेमाल लेकिन सीधे शॉट कवर के हाथों में और बादशाह शेख जो कि एग्जॉस्टेड हैं थोड़ा सा ये अब शार्प सिंगल शायद नहीं ले पाएंगे तो 1 और डॉट। बेहतरीन गेंदबाजी हेमंत द्वारा फिर से एक फ्लाइट एंड गेंद। रमन की कोशिश रूम बनाने की लेकिन रूम बनाने के बाद वो बीट हो गए क्योंकि गेंद स्पिन होकर बाहर चली गई। एक और बढ़िया ओवर हेमंत चिलकुरी का जिसमें सिर्फ 3 रन आए। हालांकि कोई विकेट उन्होंने नहीं लिया लेकिन साल पारी का ये 16वां ओवर था तो 16 ओवर से अगर आप 3 रन देते हैं तो ये बढ़िया ओवर। एक
एक और चेंज बॉलिंग में अनिल की जगह योगेश सेठी मीडियम पेस करेंगे बादशाह शेख को। पहली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट, लेकिन अब बादशाह टाइम करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। पॉइंट सीधे पॉइंट के हाथ में, पॉइंट फील्डर के हाथ में गेंद खेली और रमनदीप दौड़कर आ गए, 1 रन। योगेश की अगली गेंद फिर से शॉट ऑफ स्टंप के बाहर। रमनदीप काफ़ी देर से क्रीज पर हैं, लेकिन अभी भी टाइमिंग के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। उन्होंने अब तक 12-13 गेंदें खेली हैं, केवल 4 रन बनाए हैं। अब मिलेनियल्स को मूव ऑन करना होगा, तेजी से रन बनाने होंगे। इस बार गेंद हवा में, फील्डर तैनात डीड विकेट पर, लेकिन फील्ड गेंद उनके पार। 6 रन का इशारा अंपायर का। रमनदीप टाइमिंग उनकी वापस आती हुई, ये उनकी बल्ले से निकला पहला बड़ा शॉट जो कि मिड विकेट के बाहर जाकर गिरा और 6 रन रमनदीप के खाते में। भरत तो योगेश की अगली गेंद फिर से फ्लाइटेड गेंद, फुल गेंद, नॉट फ्लाइटेड गेंद। अच्छी फील्डिंग पॉइंट के फील्डर श्रीहर्षा द्वारा, लेकिन बैट्समैनों को 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। ये फुल डिलीवरी थी, बैट्समैन ने ड्राइव किया, लेकिन बॉल सीधे पॉइंट फील्डर के हाथों में गई। 6 रन और उसके बाद एक सिंगल। सेंसिबल क्रिकेट। योगेश की अगली गेंद, बादशाह शेख कदमों का इस्तेमाल, गेंद हवा में, सीधे भरत के हाथों में, लेकिन नहीं। एक और छक्का इस ओवर से। बादशाह बेहतरीन बैटिंग करते हुए, राम जो कि जल्दी आउट हो गए थे उनकी कमी पूरी करते हुए अब बादशाह पहुंच चुके हैं 80 रन पर 57 गेंदों में 3 छक्कों और 9 चौकों की मदद से। टीम का स्कोर बढ़कर हो गया 135, 135 2 विकेट के नुकसान पर। जैसे ही मैंने कहा था कि मिलेनियल्स को मूव ऑन करना पड़ेगा, शायद बैट्समैन ने सुन लिया। पहले रमनदीप ने एक छक्का लगाया और अब बादशाह ने, तो ये ओवर काफ़ी महंगा साबित होता हुआ योगेश के लिए। योगेश की अगली गेंद आगे बढ़कर इसे फुल टॉस बनाया बादशाह ने, लेकिन उसको अच्छे से टाइम नहीं कर पाए, तो केवल 1 रन डीप इन विकेट के फील्डर के पास। अंपायर का इशारा, ओवर। सत्रह ओवर के समाप्ति पर हवा में गेंद, मिड विकेट के ऊपर से ये गगनचुंबी छक्का। बादशाह शेख अब फुटबॉल की तरह गेंद को देख रहे हैं और स्वागत किया उन्होंने हेमंत का एक छक्के के साथ। हेमंत जिन्होंने अब तक 2 बेहतरीन ओवर्स किए थे, केवल 2 ओवर में केवल 6 रन दिए थे उन्होंने, लेकिन तीसरे ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगाया बादशाह ने। इस छक्के के साथ बादशाह का स्कोर हो गया 87, 13 रन दूर अपने शतक से। हेमंत की अगली गेंद, शॉट आउटसाइड ऑफ, कट किया इसे, लेकिन गैप में नहीं डाल सके। सिर्फ 1 रन मिलेगा। डीप के फील्डर स्वीपर ने इसे फील्ड किया और बॉलर के पास वापस किया गेंद को। हेमंत की अगली गेंद, फिर से गेंद हवा में, लेकिन 2 फील्डरों के बीच में, और ये इस मर्तबा गेंद टप्पा खाकर बाहर गई है, तो अंपायर का इशारा 4 रन। इस चौके के साथ रमनदीप का स्कोर हो गया 15 रन और मिलेनियल्स टीम का स्कोर बढ़कर हो गया 147, 147। 2 विकेट के नुकसान पर अब दोनों ही बैट्समैन खुलकर बल्लेबाजी करते हुए
इनकी पार्टनरशिप हो गई है 79 केवल 53 गेंदों में। एक और फ्लाइटेड गेंद, एक और ड्राइव, मिसफील्ड वहां पे शॉर्ट कवर के फील्डर द्वारा, लेकिन कोई नुकसान नहीं, सिर्फ एक रन। अब रमनदीप की भी टाइमिंग वापस आती हुई, उन्होंने भी अपनी पिछली 3 गेंदों में एक छक्का और एक चौवा लगाया है। हेमंत की अगली गेंद, शॉट ऑफ स्टंप के बाहर, हवा में गेंद, लेकिन सीधे लॉन्ग ऑन फील्डर के हाथों में, 1 बाउंस। कैच नहीं हुआ, ये पहली बाउंस पर गेंद पकड़ी भरत सेठी ने और बॉलर को वापस की, एक और रन। हेमंत के ओवर की आखिरी गेंद, ओ ये नो बॉल का इशारा होगा, क्योंकि गेंद ने दूसरा टप्पा बैट्समैन को पहुंचने से पहले खा लिया था। एक और नो के साथ टीम का स्कोर मिलेनियल्स का 150, 150। ये फ्री हिट, मौका रमनदीप के पास, ये वाइड। हेमंत थोड़े से प्रेशर में लग रहे हैं, क्योंकि ये बॉल पर फ्री हिट है। तो दो अब तक बेहतरीन ओवर किए थे, लेकिन ये महंगा ओवर साबित होता हुआ हेमंत का। आखिरी बॉल देखना है फ्री हिट पर क्या करते हैं हेमंत, और ये क्योंकि फ्री हिट थी, कीपर ने हालांकि स्टंपिंग की, लेकिन मैं समझता हूँ फ्री हिट पे सिर्फ रन आउट ही मिलेगा, स्टंपिंग नहीं मिलेगी। तो रमनदीप कुछ खास कर नहीं पाए फ्री हिट का, वो आगे बढ़ गए थे, गेंद उनके पैरों के बीच से निकल गई। लेकिन ये एक और महंगा ओवर, 15 रन इस ओवर से मिलेनियल्स का स्कोर बढ़कर हो गया 151, 151। आखिरी 2 ओवर्स बचे हैं, देखना है बादशाह शेख सेंचुरी के लिए दरकार 11 रन बना पाते हैं या नहीं। लवनीश आए हैं अपना आखिरी ओवर लेकर, अपने कोटे का आखिरी ओवर, लवनीश का चौथा ओवर, और इस पारी का, इस इनिंग्स का 19वां 19th ओवर। फील्ड को थोड़ा सा अपने बॉलिंग प्लान्स के मुताबिक सेट करते हुए लवनीश राइट आर्म ओवर दी विकेट। बादशाह फिर से कदमों का इस्तेमाल, लेकिन शायद बहुत ज़ोर से मारना चाहते थे, तो टाइमिंग उतनी ख़ास नहीं कर पाए। गेंद गई सीधे पॉइंट फील्डर के पास, पॉइंट पर श्रीहर्षा, उन्होंने फील्ड किया और बॉल वापस की बॉलर को। बैट्समैन ने लिया 1 रन, इस 1 रन के साथ बादशाह पहुंचे 90s में। बेहतरीन गेंद लवनीश की, देखा कि बैट्समैन रूम बनाना चाहते हैं, उसको बैट्समैन को फॉलो किया और बैट्समैन को टक किया। बैट्समैन के पास रूम नहीं, इनसाइड एज कीपर के पास, डॉट बॉल। इस मर्तबा फिर से एक और शॉर्ट गेंद, रन आउट का मौका, डायरेक्ट हिट होता तो शायद, अनफॉर्चुनेट। बादशाह बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहे, 90 के रन पर रन आउट हो गए। ये रन शायद ज़रूरी नहीं था, लेकिन स्ट्राइक लेना चाहते थे शायद, इस वास्ते भाग गए, लेकिन ग्राउंड नहीं बना। ये डायरेक्ट हिट भी थी और एक बेल बाकी भी थी, तो कीपर ने दूसरी बेल बॉल कलेक्ट करके गिरा दी। एम्पायर का इशारा, रन आउट। शायद आज इसी तरह आउट हो सकते थे बादशाह शेख, क्योंकि वो बहुत अच्छा टाइम कर रहे थे बॉल को, और उनकी मिस टाइम शॉट्स भी कीपर किसी फील्डर के पास नहीं गई, गैप्स में गई, नो मैंस लैंड में गिरी। बॉलर लवनीश ने अपने फॉलो थ्रू में अच्छा सा फील्ड किया, विकेट्स पे थ्रो किया, और ये शायद डायरेक्ट हिट थी। डायरेक्ट हिट, एम्पायर का इशारा, आउट। नए बैट्समैन सूरी, उनके पास सिर्फ 9 गेंदें बाकी है। देखना है इन 9 में ये 2 बैट्समैन क्या कर पाते हैं।
एक्सट्रम गार्ड लेते हुए सूरी, लवनीश चौथी गेंद के साथ फिर से एक शॉर्ट गेंद, लेकिन सूरी ने इसे आड़े बल्ले से खेला। ये बहुत अच्छी रनिंग रमनदीप द्वारा, 2 रन की पूरे कर लिए। बढ़िया रनिंग, इन ओवर्स में ऐसी रनिंग रिक्वायर्ड दरकार होती है और रमनदीप अच्छी रनिंग का मुजाहरा करते हुए सूरी जो कि बड़े हिटर हैं, बिग हिटर हैं, उनको स्ट्राइक देते हुए लवनीश की अगली गेंद, एक और शॉर्ट गेंद, एक और मिस, प्ले एंड मिस। बैट्समैन और एक और रन आउट। कीपर ने, बैट्समैन ने बॉल मिस की, 22 भागना चाहते थे, कीपर ने थ्रो किया, डायरेक्ट हिट लगी स्टंप्स पर। हिट लगने के बाद रमनदीप फिर से भागे, लेकिन कीपर चौकन्ना थे, उन्होंने सीधा बॉलर के बॉल पास की और नॉन स्ट्राइकर एंड पर बॉलर ने विकेट्स डिस्टर्ब की। एम्पायर का इशारा, रन आउट। सूरी 2 बॉलों पर 2 रन बनाने के बाद रन आउट। मिलेनियल्स की चौथी विकेट का पतन। क्विक रन्स की कोशिश में विकेट्स गंवाते हुए मिलेनियल्स की टीम। सूर्य की विकेट के गिरने के बाद संदीप सूर्यवंशी जो कि इस टीम के कप्तान हैं, आज मिडिल में आते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड पर होंगे। लवनीश की अगली गेंद, रमनदीप एक और प्ले और मिस। इस ओवर में लवनीश ने तकरीबन हर बॉल उसी लेंथ पर की है और बैट्समैन को मौका नहीं दिया बॉल के अंडर आने का, बड़े शॉट खेलने का। सो डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। इस ओवर से आए केवल 3 रन। मिलेनियल्स 154 भी काफ़ी अच्छा स्कोर है, काफ़ी रेस्पेक्टेबल स्कोर है ये, और मैं समझता हूँ इस पिच पर डिफेंडेबल भी है। देखना है आखिरी ओवर में क्या कर पाते हैं। आखिरी ओवर लेकर आए हैं योगेश। पहली बॉल, प्ले एंड मिस। सैंडी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, अच्छी कीपिंग विकेट कीपर मोइन द्वारा, बैट्समैनों को मौका नहीं दिया 22 लेने का। योगेश अगली गेंद, बॉल हवा में, डीप मिड विकेट के फील्डर बॉल के नीचे आते हुए, लेकिन बॉल उनसे बहुत पहले लैंड कर गई। कीपर के पास थ्रो, कीपर ने अच्छा कलेक्ट तो किया, बहुत अच्छी थ्रो कीपर ने कलेक्ट भी किया, लेकिन स्टंप्स को नहीं बिखेरे पाए और सैंडी दूसरे रन के लिए वापस। 2 रन के साथ स्कोर बढ़कर 156, 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर की तीसरी गेंद, गैप में 2 मिसफील्ड, वहां पर फिर से दूसरे रन के लिए बैट्समैन आते हुए सैंडी, और आसानी से मुकम्मल कर लिए 2 रन, और इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़कर हो गया 158, 158, 4 विकेट के नुकसान पर। तो मिलेनियल्स अपने टारगेट 160 के बहुत करीब, सिर्फ 2 रन और चाहिए। 160, 158। अगली गेंद, फिर से एक और प्ले एंड मिस, अननेसेसरी थ्रो वहां पर कीपर मोइन का, और रमनदीप अकुला ने एक बाई चुरा लिया, क्योंकि जब विकेट कीपर मोइन ने थ्रो किया तो थ्रो स्टंप्स को लगी और बॉल दूर चली गई, वहां पर कोई बैकिंग नहीं कर रहा था। एक एक्स्ट्रा और स्कोर हो गया 159। 5वीं गेंद हवा में, शॉट थर्ड मैन के हाथ को लगकर निकल गई। गेंद जाती हुई थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, लेकिन रुक गई। संजय फील्ड करके वापस किया और 2 रन का इजाफा। बॉलर नाखुश, लेकिन मैं समझता हूं कीपर ने अच्छी कोशिश की। बॉल उनके हाथ को लगी जरूर, लेकिन उनके पहुंच से दूर थी। आखिरी गेंद इनिंग की, एक और शॉर्ट डिलीवरी, प्ले एंड मिस।
Dot ball. Dot ball to end the over, and the score remains on 161. So the target for Team Rampagers will be 162 in their allotted 20 overs. We'll be back with the chase in a short while from now.
Hello, everybody, and welcome back. You're all set for the chase to get underway. The two umpires, Sajjad Hashmi and Jawad Ali, out in the middle. The openers, Rampagers openers, also out there, and the Millennials setting their field. The target for the team Rampagers would be 162 from their 20 overs. Rampagers, after winning the toss and opting to field, would have liked to restrict the Millennials to something under 150, 140 maybe. Yeah, 140 would have been ideal for them, because a chase of 162 on this pitch is a little bit difficult. It's not impossible. Nothing is impossible. So, Team Rampagers will have to bat very well to get to this 162. Need their top order to click. Left and right combination out there in the middle for the team Rampagers. Umpire Jawad Hashmi. Standing straight. Sajjad Hashmi will be standing on leg, Ravindra to open the bowling for the Millennials, and Shashank will be on strike for Rampagers. You're all set to begin. First ball of the chase, Ravindra to Shashank. That's a good start by the Rampagers. Solid defense from Shashank. A good delivery from Ravindra. Good length around the fourth stump, targeting the off stump. Ball coming in with the angle. Shashank right behind the ball. Defends it solidly. Borrower fields it in his follow through. Next ball. A fuller delivery played in the air, but no. Doesn't reach the man at mid-off. Ramandeep at mid-off, I think, does well. Fields the ball and throws it back towards the batsman, who was looking for a run. Hits the stumps directly, but batsman had made his ground. Sandeep, the captain, keeping wickets there. Next ball from Ravindra, third of the over. Shot outside off, cut straight to the man at short cover there. Short extra cover, does well and prevents any opportunity of a run. 3 dots to start by Ravindra. Fourth ball of the over. It's a little bit on the fuller side. Shashank drives it down the ground towards long on to get off the mark. First run on the board for the team Rampagers. Rampagers open their account with a single towards long on. That brings Moin on strike. Change in field now, as the left-hander is on strike. The field as of now. Field for the left-hander is the two men outside are along off,
and a sweeper. Two men on the like side, short square leg and a mid on and a short mid wicket. In fact, three men on the onside. All are inside the ring. A mid on, short mid wicket and a short square leg. Ravindra, football of the over, little bit towards leg stump, but the length was good enough. Moin couldn't do much about it. Plays it back to the bowler. So another dot. Last ball of the over. False start there for Ravindra. He goes back to his run-up. Ravindra to Moin. Last ball of the over. Shot outside of room for Moin, but he plays it straight to point. No question of run there. Another dot to end the over, and it's one without loss at the end of first over. Vikram Bora it will be to share the new ball. Slight changes in field. We have a third man and a sweeper in position. Three men inside the ring on the onside and four on the off. Strong offside field. Mid off, mid on. Vikram, right arm over. First ball of his over, shot outside off, but straight to the man at short cover. Short extra cover. Fielded as well and prevents any opportunity of a run. Score remains at 1. Good start for Vikram as well. Second ball of the over. Another shot one, and I think it's bowled him. Yes, played on there by Shashank. It was not that short, but Shashank looking to force the issue there, going for the pull. Inside edges it onto his leg stump, and the bail is out. Bail is down rather. And the first wicket down for Team Rampagers. Shashank out for just 1. Bowled by Vikram Bora. As I told you, good start for Vikram as well, and it has got better now because he has got a wicket of his second delivery. Lavnish has walked out to the middle at the fall of Shashank's wicket. Lavnish, one of the main batsmen for the Team Rampagers. I think Lavnish has a big responsibility today. He will have to do the bulk of the scoring. Slight field change for Lavnish. There is a long on in place now, and sweeper has been brought in. Third ball of the over, shot outside off, guided to the man at point, goes for a sharp single and completes it. Sandy, the keeper, doesn't collect the ball cleanly. Anyways, batsman had made his ground. Another field change as the left-hander Moin comes on to strike.
Two men D in the deep for Moin, or a third man, deep third man that is, and a sweeper. Sandy, captain, marshalling his troops. Vikram to bowl to Moin now. Left-handed Moin. The short one this time, but at the batsman body. Just a single towards short mid-wicket. Very good shot delivery there from Vikram, cramping a Moin, the batsman for room, who tucks it off his hips for a single. Left and right combination, keeping the fielders on their toes. Vikram to Lavnish, fifth ball of the over. Shot goes for the pull, but misses the ball completely. No signal from the umpire, so it's a dot. Vikram bowling a good line there, not going through straight, keeping it outside of 5th to 6th stump, and has set a field according to his bowling plans. A strong offside field, 5 men there on the offside now in the ring, and a third man as well. Vikram with the last ball of the second over. Another short one, it's in the air. Wow, played down the ground. Fielders there got excited, but I think it was way outside the reach of the bowler Vikram. I won't say it was a cotton ball opportunity, but maybe slight change in pace there. Batsman was early into his shot, and the top edge went towards mid-on. Anyways, single to end the over, no damage done. The score is 4 for the loss of 1 wicket, and it will be Ravindra to continue. It was single of the last ball of the over, so Lavnish will be on strike, facing Ravindra. Strong offside field for Ravindra as well. 6 men on the off. Appeal there, but I think the ball brushed the pads there on its way. Though the keeper Sandy doesn't collect the ball cleanly, but no damage done because the ball was very near to him. So batsman didn't risk running. As I told you, strong offside field. There's a short third man up 2 points, a cover, an extra cover, and a mid off. Second ball. Lavnish this time charges towards the bowler. The batsman bowls towards his body. Lavnish goes through with the shot but doesn't connect, and ball hits his pads. Third ball of the over. Shot outside off, guided to man point. Short fielding there. A direct throw would have had him, I think, but no. Instead, ball goes for overthrows. So 2 runs added to the total. Score moves to 6, the loss of 1 wicket. This is good bowling from Ravindra, sticking to his line and length, not giving the batsman any room or width, not giving the batsman any freedom, not allowing the batsman to free his arms, and fielders inside the ring also keeping the batsman on their toes. This time, but the ball is going towards the boundary. It was a little bit full, and that's a 4. First boundary of the inning. Rampagers inning of the bat of Lavnish. Just a little bit full, and that was enough for Lavnish to clear. Once he cleared the infield, the ball, there was no stopping the ball, and the ball raised to the pound boundary for a 4. First boundary for team Rampagers. With that boundaries, Rampagers moved to 10 for loss of 1 wicket. Ravindra. Another ball. Oh no, it goes down. It's another 4. That was an opportunity. Man at mid-off.
Not sure who it is. I Ram. think yeah, it is Ram. Got his fingertips to it. Okay, just couldn't hold on. Costly miss there, I would say. Ball went for a boundary, and the batsman dropped his Lovenish. He's a quality batter. You just can't let him get away like that. He'll make you pay for that. Last ball of the over. Shot outside off. Once again guided towards point. Another single. And that's the end of the over. So at the end of this third over, score is 15 for the loss of 1 wicket. A little bit expensive over this one from Ravindra because of those 2 boundaries. 11 runs came of that over. It will be Vikram Bora to continue. So another single of the last ball means Lavnish will keep the strike. Lavnish playing his shots, trying to make full use of the fielding restrictions. First 6 overs. Yeah. After those 2 boundaries, the offside field is changed. There is a sweeper in position now. A sweeper in the deep. Still 5 fielders on the offside inside the ring. Full toss once again in the air towards mid-off, but ball landed well short of the fielder there. No single taken. There wasn't any there. A dot ball. Vikram with the next ball. Second of the over. Charging in right arm over. Shot outside off. Ball rises more than the batsman expected. Batsman goes for the cut but misses it. Good bowling there from Vikram. Keeping the batsman guessing. Alternating his lengths. Vikram has started well. Got a wicket in his first over. 2 dots to start the second over. Third ball of the over. This time it's full towards the man. Good fielding there by the man at sweeper cover. And he keeps the batsman to a single. That was a well-timed shot. Ball was in the air. I thought it might carry to the sweeper there, but just bounced in front of him. Fielder at the sweeper did well. That single. Moin back on strike after at least 2 hours. Moin being a left-hander prompted field change. The field now for Moin is again a strong offside field. A third man and a sweeper again for Moin as well. Vikram shot. That's directed by Vikram. Appeal there by the fielders and the keeper, but yeah, Lavnish very quick there. Made his ground. It's another single. Very good effort there by Vikram, although he had just bowled the ball. Still, in his follow through, charged towards the ball and threw the ball at the strikers and hit the stumps directly. But batsman had time to complete single. Sharp single there. Change in field now. There is a long off in position and a sweeper cover. The 2 men in deep. Vikram with the next ball of the over. This is another full delivery, but straight to man at short cover. Short extra cover there. Who does well and fields the ball and stops the batsman from taking a run. Another dot. A very good over so far from Vikram. Just 2 runs from the 5 deliveries. Last ball coming up.
Let's see if he can close it. Close it well. Last ball, shot, ball is in the air and a simple catch to Vikram. A cotton ball opportunity well taken by Vikram. Vikram has got the big wicket of Lavnish. Shot towards its body. Lavnish goes through with his shot. A top edge taken, well taken by Vikram in his follow through. That is a big strike. A strong jolt to the team Rampagers, I would say. Lavnish was one of their mainstay, but he's back into the dugout now with a score on just 17. That was also the last ball of the over. So the score 17 for the loss of 2 wickets after 4 overs. That's an excellent start for the Millennials to their defense of 161. New man working in the fall of Lavnish wickets is Pyari. He has a decent record. He's played 51 matches so far. Score 419 runs to be precise. Highest score of 65. And he is working into the middle with a lot of responsibility on his shoulders. Because Team Rampagers need him and need him badly. Moin still out there. He'll be facing now Ravindra to continue his third over. A very good power play so far for the Millennials. They have kept the scoring rate under check and also picked up 2 big wickets, that of Shashank and Lavnish. The Rampagers on back foot now. Ravindra, another full delivery, but this time it's 4. Gets under it, Moin, and lofts it straight down the ground for a boundary. Yeah, loose delivery I would say, because it was very full. Give the opportunity for the batsman to get under it. Ravindra to Moin. That's a better length delivery. Not giving the batsman opportunity to get under it. Moin just defends it back to the bowler. Ravindra. Third ball of the over. A good length delivery, just guided to man at point. Moin looking for single, but Pyari sends it back, and rightly so. It was a risky single. And I think Pyari wasn't actually ready. He hadn't taken a start. Rightly, he just sends going back. Ravindra with the next delivery. Oh no, this time it's a wide. Down the leg. Ravindra has been operating on a leg stump line this over. Yeah. Fielder in the deep. Ask him to bowl it on the off. Though this time he has bowled on the off stump, but it's a full toss. Played towards long off for a single. Which brings the new batsman Pyari on strike. The score now moves to 22 for the loss of 2 wickets. In fact, it's 23 because there was a wide conceded by Ravindra before this single. Ravindra with the next delivery of the over. That's a good delivery for a batsman, new batsman.
right up there in the block hole. Nothing much batsman could do. Just plays it back to the bowler, who fields it in his follow through and goes to his run up. Last ball of the over coming up. Right arm over. It's another very good delivery to close the over. After that 4 first ball, Ravindra has made a very good comeback. Only 2 runs of the remaining 5 deliveries. That too, 1 of a wide. So just 6 runs came of that over. And with that, we come to the end of 5 overs. The score is 23 for the loss of 2 wickets. विक्रम बोरा, जिन्होंने अब तक बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है, 2 ओवर में 5 रन और 2 विकेट इनके नाम। विक्रम कंटिन्यू करेंगे ओवर द विकेट। स्ट्राइक पर है मोइन, जिन्होंने 8 बॉल खेले हैं, 7 रन बनाए हैं 1 चौके की मदद से। विक्रम की पहली गेंद गुड लेंथ, मोइन ने इसे ड्राइव किया। एक्स्ट्रा कवर के फील्डर भाग कर आए और मिड ऑफ के फील्डर ने बॉल फील्ड की। रन बनाने का कोई मौका नहीं। एक और डॉट। सैंडी, जो कि कप्तान है इस टीम के, फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए चेंज। विक्रम की दूसरी गेंद, शॉट, इसे डिफेंड किया और जब तक कि फील्डर भाग कर आते, गेंद को फील्ड करते, बैट्समैनों ने 1 रन चुरा लिया। इस 1 रन के तहत स्कोर बढ़कर हो गया 24, 2 विकेट के नुकसान पर। रैम्पेजर्स ने आज टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय किया। रैम्पेजर्स फील्डिंग में उन्होंने 2-3 लाइव्स ओपनर बादशाह शेख को दी, जिसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया और 90 रन बनाए। और मिलेनियल्स ने बनाए 161 रन। बुर्रा की अगली गेंद, ये बैट्समैन उसे फ्लिक करना चाहते थे लेकिन बाहरी किनारा लगा और ये दूसरे रन के लिए भाग गए। बहुत ही बढ़िया रनिंग प्यारी द्वारा। आउटसाइड एज थी, कीपर बॉल की लाइन के साथ लेग स्टंप की तरफ चले गए, लेकिन एज लगकर गेंद थर्ड मैन की तरफ गई और कोई इशारा नहीं अंपायर का, यानी ये रन्स गए बैट्समैन के खाते में। स्कोर बढ़कर हो गया 26 रन। विक्रम बहुत ही बढ़िया लय में नजर आ रहे हैं आज। अच्छी शुरुआत की है। तीसरे ओवर की ये चौथी गेंद, ये बॉल हवा में मिड ऑफ के पास, ये डायरेक्ट हिट मारने की कोशिश, लेकिन स्टंप्स को नहीं लगी बॉल और वैसे भी शायद बैट्समैन अपने ग्राउंड में आ चुके थे। एक और रन इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़कर हो गया 27, 2 विकेट्स डाउन। मोइन लेफ्ट हैंडर फिर से स्ट्राइक में और फिर से फील्डिंग में चेंज। रैम्पेजर्स टॉस जीतकर फील्डिंग चूज की। वो चाहते थे कि 130, 140 तक सीमित रखे मिलेनियल्स को, लेकिन नहीं कर पाए। अब 160 के चेज में अनदर वेरी गुड डिलीवरी, बहुत ही ज़्यादा फुल थी ये डिलीवरी, ड्राइवेबल लेंथ नहीं थी, तो बैट्समैन सिर्फ उसे गाइड कर सके सामने ठहरे फील्डर के पास, जिन्होंने बॉल को रोका और रन बनाने की संभावना को ख़त्म किया। स्कोर 27। विक्रम अपने तीसरे ओवर की आखिरी गेंद के साथ बॉलिंग करेंगे मोइन को। मोइन 8 रन पर खेल रहे हैं 11 गेंदों का सामना करने के बाद। ये एक और बढ़िया गेंद, शॉट थी, बॉडी पर आई, टप पड़ने के बाद
मौका नहीं मिला मोइन को हाथ खोलने का। मोइन ने इसे डिफेंड किया और सामने ठहरे फील्डर ने इसे रोका। कोई रन नहीं। एक और डॉट के साथ विक्रम का तीसरा ओवर समाप्त और इस इनिंग का छठा ओवर। पावर प्ले समाप्त हुआ, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस खत्म हुई। अब मिलेनियल्स फील्ड को फैला सकते हैं, हालांकि इसकी खास ज़रूरत नहीं है अभी, लेकिन शायद सैंडी अपनी फील्ड को थोड़ा सा इन आउट करेंगे, बाउंड्रीज बचाना चाहेंगे, क्योंकि सिंगल्स और डबल्स से कुछ नुकसान उन्हें नहीं होगा। बाउंड्रीज रैम्पेजर्स को चाहिए, बाउंड्रीज, और सैंडी बाउंड्रीज बचाने की कोशिश। बॉलिंग चेंज, देवेश बॉलिंग के लिए आए हैं। पावर प्ले में दोनों ही ओपनिंग बॉलर्स ने 3-3 ओवर्स किए और एक अच्छा स्टार्ट दिया मिलेनियल्स को। 6 ओवर में सिर्फ 27 रन दिए और 2 विकेट भी लिए। रैम्पेजर्स का वर्क कटआउट। रैम्पेजर्स को चाहिए 135 रन केवल 84 गेंदों में। करंट रन रेट जो कि केवल 4.5 है। गेंद एक बार फिर से सीधे हाथ में, लेकिन बैट्समैनों ने एक रन चुरा लिया। शॉर्ट स्क्वायर लेग का फील्डर। देवेश फुल गेंद के साथ इन्होंने भी स्टार्ट किया। देवेश की अगली गेंद, ओहो, शॉर्ट बॉल थोड़ा सा मोइन की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा उछली। मोइन हालांकि बैकफुट पर चले गए थे पुल खेलने के लिए, लेकिन जैसे ही देखा कि बॉल ने ज़्यादा उछाल ली है, अपने शॉट को रोका, अबॉर्ट किया और उसे डिफेंड किया पॉइंट की तरफ। ये एक और शॉर्ट गेंद, मोइन इस बार तो आप पीछे गए, बैकफुट पे पुल किया अलॉन्ग द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन के फील्डर के पास, एक और रन। अब सीधे हाथ के बैट्समैन स्ट्राइक पर। फील्ड में थोड़ा सा चेंज। देवेश की अगली गेंद, फिर से शॉट। पुल करना चाहते थे प्यारी, लेकिन शायद इनसाइड एज लगकर गेंद उनके पैड्स पर गई और पॉइंट की तरफ रोल हो गई। कीपर भाग कर गए और रन। देवेश की अगली गेंद और ये बॉल, जबरदस्त बॉल, प्यारी अक्रॉस द लाइन खेले और कंप्लीटली मिस कर दिया बॉल को और बोल्ड हो गए। इस विकेट के साथ टीम रैम्पेजर्स के 3 विकेट, स्कोर केवल 29 रन। रैम्पेजर्स की पारी लड़खड़ाती हुई। 3 टॉप ऑर्डर्स के विकेट खो चुके हैं। स्कोरबोर्ड पर केवल 29 रन है। नए बैट्समैन हरीश कुमार प्यारी के आउट होने पर विकेट पे आए हैं। देवेश
पहला ओवर देवेश का, पहले ही ओवर में एक सफलता प्राप्त कर ली है इन्होंने। 5 गेंदों में 2 रन 1 विकेट देवेश के खाते में। इस ओवर की आखिरी गेंद, सामना करेंगे हरीश कुमार। अरे वाह, बढ़िया गेंद, एक और थोड़ी सी फुलर साइड पर थी, बैट्समैन ने इसे ड्राइव किया लॉन्ग आउट की तरफ, और एक और सिंगल के साथ स्कोर बढ़कर हो गया 30। 3 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर के अंत। एक और चेंज बॉलिंग में, सूरी बॉलिंग के लिए आए हैं। सूरी बॉलिंग पर सामना करेंगे हरीश कुमार, जो कि अभी अभी क्रीज पर आए हैं। केवल 1 गेंद का सामना किया है और 1 रन बनाया था। 1 रन से खाता खोला था हरीश कुमार ने पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर। सूरी पहली बॉल आउटसाइड ऑफ, कट करने के लिए गया बैट्समैन, लेकिन बीट हो गए। कीपर ने कलेक्ट किया और वापस किया बॉलर को। दूसरी गेंद, फिर से शॉट आउटसाइड ऑफ, कट, पॉइंट फील्डर को बीट किया, लेकिन स्वीपर फील्डर मौजूद है। दूसरे रन के लिए आते हुए बैट्समैन, थोड़ा रिस्की जरूर था, लेकिन कमजोर थ्रो डीप के फील्डर से, और बैट्समैनों की बढ़िया रनिंग। 2 रन टीम के खाते में, स्कोर बढ़कर हो गया 32। 3 विकेट के नुकसान पर। अब ऑफसाइड की फील्डिंग को और स्ट्रॉन्ग किया गया है। एक और फील्डर पॉइंट रीजन में तैनात कर दिया गया है। सूरी की अगली गेंद, थोड़ी सी शॉर्ट और चेंज ऑफ पेस, ये ऑफ पेस डिलीवरी थी, इस वास्ते बैट्समैन इसे टाइम नहीं कर पाए। केवल 1 रन पॉइंट रीजन में। मोइन लेफ्ट हैंड बैट्समैन अब स्ट्राइक पर, सामना करेंगे सूरी का। क्योंकि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है तो थोड़ी सी फील्ड में चेंजेस हुई। ये खराब गेंद और सही नतीजा, 4 रन मोइन के लिए। शॉट बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा शॉट और लेग स्टंप के बाहर दी ये गेंद, मोइन ने इसे दिशा दिखाई और 4 रन अपने खाते में जोड़े। ये बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही पुअर गेंद जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, वो वाली गेंद थी ये। शायद लेफ्ट और राइट हैंड के कॉम्बिनेशन से सूरी डिस्टर्ब्ड हुए थोड़ा सा। ये राइट हैंडर वाली गेंद उन्होंने लेफ्ट हैंडर को कर दी। सूरी की अगली गेंद, ये बेहतर गेंद, थोड़ा सा फुल थी, इसे मिड ऑफ की तरफ ड्राइव किया मोइन ने, एक और सिंगल लिया। ये ओवर थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ। अभी तक 8 रन इस ओवर से 5 गेंदों में। सूरी आखिरी गेंद, एक और ड्राइवेबल लेंथ गेंद और शानदार कवर ड्राइव, बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद, 4 रन के लिए। एम्पायर ने भी 4 का इशारा किया और स्कोर बढ़कर हो गया 42। 3 विकेट के नुकसान पर। ये खासा महंगा ओवर साबित हुआ। सूरी का पहला ओवर 12 रन, 2 चौके इस ओवर से आए। पहले मोइन ने 1 चौका लगाया डीप फाइन लेग रीजन में। उसके बाद आखिरी गेंद पर हरीश ने बेहतरीन कवर ड्राइव खेली और कवर रीजन से 1 और चौका लिया। अभी भी रन रेट सिर्फ 5.25। 120 रन चाहिए 12 ओवर में 10 के रन रेट से। देवेश की अगली ओवर की पहली गेंद, ये दूसरा ओवर देवेश का। अच्छी गेंद, शॉर्ट ऑफ लेंथ पड़ने के बाद बैट्समैन को छोड़ती हुई गई, बैट्समैन ने डिफेंड किया। अगली गेंद, फिर से एक और गुड लेंथ गेंद, फिर से बैट्समैन बीट। इस मर्तबा
कट करने के लिए गए थे मोइन, लेकिन गेंद ने फिर से उनको छोड़ते हुए गई गेंद फिर से, और बैट्समैन बीट हो गए। देवेश की अगली गेंद, ये थोड़ी सी फुल गेंद हवा में है लेकिन नहीं पहुंचेगी, लॉन्ग ऑन के फील्डर के हाथ में नहीं पहुंची। 1 रन। कैच का कोई मौका नहीं, क्योंकि बॉल बहुत पहले लैंड कर गई थी। हवा में ज़रूर थी लेकिन कैच नहीं। देवेश हरीश कुमार को फिर से बढ़िया गेंद, एक जेंटल पुश, लॉन्ग ऑन के फील्डर आए, बॉल को फील्ड किया और वापस किया देवेश को। बढ़िया ओवर। अब तक केवल 2 रन 4 गेंदों में। मोइन फिर से स्ट्राइक पर, फील्ड एडजस्टमेंट लेफ्ट हैंडर के लिए। ओवर की 5वीं गेंद, बढ़िया गेंद, सीधे फील्डर के हाथ में, एक और डॉट। इस ओवर में मोइन को बांध कर रखा है देवेश ने, उन्हें मोइन को कोई मौका नहीं दिया अपने हाथ खोलने का। ये मोइन इसलिए रिवर्स स्वीप, एक और चौका। मौका मोइन ने थोड़ा सा अनकन्वेंशनल शॉट खेला, एक रिवर्स स्वीप और गैप में भी था। हालांकि स्वीपर तैनात है लेकिन वो बॉल तक नहीं पहुंच पाए, तो फिर से चौका ओवर की आखिरी गेंद पर। पिछले 2 ओवर के आखिरी गेंद पर 2 चौके आए हैं। इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर हो गया 48 यानी 48 9 ओवर के समाप्ति पर। इनिंग का 10वां ओवर करने के लिए आए हैं वासु। वासु मीडियम पेस बॉलिंग करेंगे। स्ट्राइक पर है हरीश कुमार। पिछले ओवर की लास्ट गेंद पर मोइन ने एक चौका लगाया था। 114 रन चाहिए 11 ओवर में। तकरीबन 10 के औसत से रन बनानी है, बल्कि 10 से ऊपर का रिक्वायर्ड रन रेट है 10.4। वासु की पहली गेंद फुल टॉस, लेकिन सीधे मिड डीप विकेट फील्डर के हाथ में शॉट, केवल 1 रन। वासु लेफ्ट हैंडर के लिए राउंड दी विकेट बॉलिंग करेंगे। फील्ड चेंज थोड़ा सा, 5 फील्डर रिंग के अंदर, 1 लेग साइड पर और 4 ऑफ साइड पर। वासु दूसरी गेंद, लेकिन लेग स्टंप के बाहर। पुअर गेंद, कमजोर गेंद, अंपायर का इशारा वाइड। इस वाइड के साथ स्कोर बढ़कर हो गया 50 टीम रैम्पेजर्स के 9.1 ओवर्स में। वासु की अगली गेंद, ये बढ़िया गेंद, इनसाइड एज, लेकिन गैप में बॉल जाती हुई फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, लेकिन विक्रम ने अच्छी फील्डिंग की और केवल 2 रन पर रोका बैट्समैन को। अच्छी फील्डिंग विक्रम की। ये इनसाइड एज था तो बॉल पर शॉट में उतनी टाइमिंग नहीं थी, शायद बाउंड्री के पार नहीं जाती है गेंद, लेकिन अच्छी कोशिश विक्रम की। अगली गेंद शॉर्ट पॉइंट पर खेला, डिफेंड किया, बल्कि मोइन ने सिंगल लेना चाहते थे लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में गई थी गेंद, तो रन का कोई मौका नहीं। अच्छी कॉल लॉन स्ट्राइकर की वहां पर, वरना रन आउट हो जाता। अगली गेंद फुल टॉस, गेंद हवा में है, विक्रम उसके नीचे है। यह बेहतरीन कैच विक्रम का, वेल जज कैच। मोइन जो कि काफी देर से क्रीज पर टिके हुए थे, फुल टॉस गेंद पर आउट हो गए। ये फुल टॉस जो कि मैदान के किसी भी कोने में भेज सकते थे मोइन,
लेकिन सीधे हवा में मार दिया और विक्रम ने कोई गलती नहीं की। वेल जज्ड कैच विक्रम का। विक्रम आज फील्ड पर काफ़ी चुस्त नज़र आ रहे हैं। अपने बॉलिंग जब वो बॉलिंग कर रहे थे अपने फॉलो थ्रू में भी काफ़ी चुस्त थे, काफ़ी रन रोके, और ये एक और बढ़िया कैच। मोइन के आउट होने पर भरत सेठी आए हैं लेफ्ट हैंडर की जगह लेने के लिए, एक और लेफ्ट हैंडर। वासु को अपने पहले ओवर में एक सफलता। रैम्पेजर्स की चौथी विकेट का पतन। बैट्समैन क्रॉस कर गए थे जब गेंद हवा में थी, तो भरत सेठी नॉन स्ट्राइकर एंड पर होंगे और वासु का सामना करेंगे हरीश कुमार। वासु ओवर की 5वीं गेंद सामना करेंगे हरीश कुमार। एक और फुल टॉस, लेकिन इस मर्तबा गैप में 4 रन। पिछले फुल टॉस पर एक विकेट मिली थी वासु को, शायद इसीलिए उन्होंने एक और फुल टॉस की है, लेकिन इस मर्तबा हरीश कुमार बैट्समैन थे, उन्होंने इस फुल टॉस का पूरा फ़ायदा उठाया और विकेट और गेंद को भेज दिया मिड विकेट, डीप मिड विकेट के बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। 4 रन के स्कोर बढ़कर हो गया 56, 56 रन, 4 विकेट के नुकसान। ये बढ़िया गेंद गुड लेंथ पर सीधे शॉर्ट कवर फील्डर के हाथों में, लेकिन अच्छी रनिंग बैट्समैनों द्वारा और 1 रन। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़कर हो गया 57, 10 ओवर के अंत पर। 160 रन का पीछा करते हुए टीम रैम्पेजर्स लड़खड़ाती हुई पारी रैम्पेजर्स की। 4 विकेट उन्होंने खो दिए हैं और केवल 57 रन बोर्ड पर है। करंट रन रेट सिर्फ केवल 5.7। 105 रन और बनाने हैं रैम्पेजर्स को। रिमेनिंग 10 ओवर में 10.5 के औसत से। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे।
Welcome back after the rings. It will be Devesh to start the proceedings from the other end as well. Devesh with his third over, 11th of the innings. First ball. A good length ball. Batsman forced to defend. It's a dot. Devesh has struck to his line and lengths. He's been bowling beautifully this morning. Second ball of his third over. This time it's a little bit short. Straight to the man at short square leg. He does get a hand to it, but doesn't stop it completely, and the ball rolls over to the boundary. No. Yes, it does. That's a 4. Devesh this time goes a little bit short, and batsman places it beautifully. Or rather, I should say, a misfield gives the batsman 4. The ball was hit straight to the man at short square leg. He did get a hand, but didn't stop it completely. Another short ball. Oh, played on. 5th wicket goes down for the team Rampagers. After a beautiful boundary last ball, Harish Kumar has played one onto his wickets. Rampagers 5th wicket down for the score of 61. The Rampagers innings in tatters now. They've lost all their top order batsmen for just 61. Still need 101 runs. And they have 2 new batsmen on the crease now. Harish Kumar out for well played 19 of just 12 balls. But he had to stay there. New batsman in now is Yogesh Sethi. He'll be facing Devesh. Devesh analysis so far 2.3 overs, 13 runs and 2 wickets. Yogesh to face Devesh. Slight change in fielding there. We have a deep mid wicket in position now. Yogesh, that's in the air but in the gap as well. A full ball driven towards sweeper. Single taken. The single, Yogesh opens his account. And the team scores moves to 62 for the loss of 5 wickets. Bharat Sethi to face his first ball. Slight delay there as Yogesh asking for some help from the umpire, fixing his headgear, the helmet I mean. Yeah, they wish to continue. Bharat Sethi to face. First ball. Yeah. Wrong line there on the leg stump. Bharat helps it towards square leg and opens his account with a single. Devesh with the last ball of his third over. Bowling to Yogesh. Another good length ball. Ball was in the air but between the 2-point fielders. Yeah, Ravindra there does well. Good footwork there from Ravindra, preventing the ball from going past him in just a single taken. With that single, we come to the end of the 11th over. The score moves to 64 for the loss of 5 wickets. 7 runs of that over.
Another bowling change. It's Ram Samalla into the attack now. He is actually a batsman who bowls, but he has got 67 wickets to his credit. And a decent economy rate as well. An economy rate of 7 in this format isn't just decent, it's good, very good. For someone who bowls in the middle overs. Ram to start. A very full ball. Batsman looking to drive. Yogesh there. Misses the ball. The keeper doesn't collect it cleanly and concedes a bye. Batsman was looking for a wide there, but not to be. Good ball to start with. Baram. Next ball, another full delivery. Ball is in the air, but falls in no man's land. Good start once again there by Ram. Third ball of the over. That's a very good drive there from Yogesh, but straight to the man at sweeper cover, and who fields it and returns it immediately. Another single. 3 singles of the first 3 balls. Ram with the next ball of his over. Yeah, that's a very good ball. Another single. Played with soft hand into the point region for single by Bharat Sethi. So that single score moves to 68. 4 singles of the first 4 balls. Singles. Yeah, that's a very good ball. Awkward bounce there for the batsman and the keeper. Extra bounce, I should say. A dot ball as a result. Last ball of the over. Ball is in the air, but straight to the man. Oh no, misfield there gives a boundary. So another boundary to end the over. 8 runs of that over. With that, score moves to 72. Loss of 5 wickets. Ram, who had bowled a very good ball until a very good over until that point, bowls a slow and short delivery. Yogesh Sethi rocks back and pulls it towards the deep mid-wicket boundary for a 4. There was a fielder there, but he just couldn't reach it. First boundary for Yogesh Sethi there. Devesh to continue his 4th, 13th over of the inning. Yeah, Devesh will bowl out. He has looked in a good rhythm. Bowled his 3 overs for just 16 runs and picked up 2 crucial wickets. The style of bowling Devesh has, I think it's better to bowl out, and he's in good rhythm. Devesh. Ball is once again in the air, straight in the... Oh, direct hit would have had him there. Very good fielding by the man at short mid-wicket there. Tried to hit this non-striker's wickets, but missed it. Batsman survives. Devesh, second ball of his 4th over. Ball is once again in the air, but in the gap as well. Oh, let's it through. Fielder there. Another boundary. Poor fielding there by the man at sweeper cover. Vikram, is it? It's Ramandeep Akula, who's also a very good fielder. He reached the ball this time, but lets it through his legs. Very unfortunate. That boundary has spoiled Devesh's figure a little bit. Devesh with the next ball of his innings.
Once again in the air, but this time in the gap. Ball is more running towards the pound boundary. It's a 4. Consecutive boundaries there for Bharat Sethi, who started steadily but now moved to 11 of just 6 deliveries. This was a little short, I feel. Yeah, shoot short, and Devish doesn't have that pace to hurry the batsman, so batsman rocked back and cut it between the two fielders, a point and full leg there. Square point, yeah, 2 points actually. Devish with the next delivery. It flapped on the pad, on the full. Umpire had no doubt there. And it's the 6th wicket down for the Rampagers. Yeah, I think he was hit on the full there. Bharat Sethi. And he had walked across his stumps. Hit in line with the stumps on the full. Umpire didn't have to judge the line whether it would have stumped the stumps, it would have hit the stumps or not, because the batsman was hit on the full. Sixth wicket down for the Rampagers. Bharat Sethi was looking good, goes for 11 with just 7 deliveries with 2 fours. That's the 3rd wicket for Devish. 2 deliveries left. Let's see if he can add another wicket to his tally. The new batsman in is Sanjay. As the record suggests, there's not much to talk about actually. He has just played 24 matches. Players got 186 runs with a highest score of 35. Sanjay with the next delivery defended towards the point region and a single taken to bring Yogesh on strike. I think that will be Sanjay's job, to give as much a strike possible to Yogesh. Devish, in fact, with the last ball of his quota of 4 overs. Good length delivery, defended towards point, and Sanjay is running for a single, completes it comfortably. That's the end of the over. At the end of 13 overs, score is 82 for the loss of 6 wickets. finger dala Ramanna. Ram to continue, but I'm over. Shot outside of ball spinning in, and batsman misses on the cut. Keeper collects it and relays it back to the bowler. The next ball, once again shot outside of, ball is in the air, played towards long off. Yogesh looking for the second. Oh, he has slipped. Yeah. He has slipped, but there was enough time for Sanjay to get back to his crease. There were two there. Unfortunate for the Rampagers in Yogesh. Next ball, another full ball straight in the hands of the short cover fielder, and does no mistake. That's the 7th wicket down. Sanjay, a full delivery, hit straight to the man at short cover. Simple catch for the man at short cover. That's Suri. He won't miss those. 7th wicket down for Rampagers. Will score at 84.
New man in replacing Sanjay is Sriharsha. Will be facing Ram. Ram with his first wicket. Three wickets left for the Rampagers. 3 wickets left for the Millennials to win this final. Another very full delivery, driven straight back to the bowler. Good, so good. That's a very good over so far from Ram. Just a single and a wicket. Yeah. Oh, good fielding. Just a single. Ball was spinning away from him, but the fielder did well to put his body in the line. That was Ravindra there and stopped the ball. Another single. 2 singles and a wicket of the first 5 balls from second over. Last ball of the over. Ball is in the air and it's a 6. Nothing the fielder at long on could do about it, because it was well hit by Yogesh. 6 to end the over. That's 6. The score moves to 88 for the loss of 7 wickets. Change in bowling there. Partho into the attack. Partho will be bowling to Sriharsha, who just walked in. One of his 2 balls. Very full delivery, played back to the bowler. No run. A dot to start with for Partho. Next ball. Another very full delivery. Goes for it. But inside edges it towards the man at deep mid wicket. 2 runs taken. Comfortable 2 there for Sriharsha. That 2 score moves to 90 for the loss of 7 wickets. Partho gain. Right arm over to Sriharsha. Another very full delivery, but this time ball is hit straight to the man at short square leg. Single. Single taken. Sriharsha moves to 4 and the team score moves to 91 for the loss of 7 wickets. Partho to bowl to Yogesh now. Another. Oh, Yogesh had hit it in the gap. Ball is running towards the pound boundary and it's a 4. Man there at sweeper cover, but he couldn't stop it. Partho was bowling very full, giving the ball air, but as soon as Yogesh came on strike, he bowled one which was flat, but Yogesh was equal to the task and cut it in the point region. This time it's a fuller delivery and played down the ground. Vikram there does well to keep the batsman to a single. A better throw. Should have been a better throw rather. Last ball of the over coming up. Partho to Sriharsha. Ball is in the air. Bayonet point running in, but lands well below, well in front of him. No damage done. Dot ball to end the over. Score remains 96 for the loss of 7 wickets. 15 overs. It's Vasu to bowl now his second over. वासु बॉलिंग करेंगे योगेश को. योगेश 19 रन बनाकर खेल रहे हैं 11 गेंदों में.
फील्ड चेंजेस। वासु की पहली गेंद, फुल टॉस बनाकर डीप मिड विकेट की तरफ खेला है। विक्रम मौजूद। श्रीहर्षा दूसरे ओवर के लिए भागते हुए, विक्रम ने फील्ड की और बॉल फेंकी कीपर की तरफ, लेकिन बैट्समैन जब तक 2 रन पूरे कर चुके थे। इस 2 रन के साथ योगेश का स्कोर हो गया, निजी स्कोर योगेश का 21 रन और टीम का स्कोर 98। विक्रम अच्छी फील्ड, लेकिन 2 रन से रोक नहीं पाए बैट्समैन को। एक और फुल टॉस, इस मर्तबा योगेश ने इसे खेला स्वीपर की डायरेक्शन में। हाँ, इस बार 2 रन का कोई मौका नहीं। अच्छी फील्डिंग स्वीपर द्वारा, केवल 1 रन। इस 1 रन के साथ योगेश का स्कोर हुआ 22 और टीम का स्कोर 99। वासु की तीसरी गेंद, एक और फुल टॉस, मिस कर दिया वहां पर श्रीहर्षा ने। कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से मारना चाहते थे बैट्समैन, और गेंद ने टॉप एज किया बॉलर के दिशा में। एक और फुल टॉस, इस मर्तबा 4 रन। बैट्समैन ने दिशाहीन गेंद का पूरा फायदा उठाया। ये फुल टॉस भी थी, उसे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर भेजा 4 रन के लिए। इस 4 रन के साथ टीम रैम्पेजर्स के 100 रन पूरे, 103 रन 7 विकेट के नुकसान पर। वासु की अगली गेंद, श्रीहर्षा, एक और बढ़िया शॉट श्रीहर्षा के बल्ले से। स्वीपर ने इस बार भागकर पॉइंट रीजन में बॉल को रोका और 2 रन। ये महंगा ओवर वासु का। 9 रन इस ओवर से आ चुके हैं अब तक। आखिरी गेंद, ओ प्लेन मिस। अक्रॉस द लाइन खेले थे श्रीहर्षा, लेकिन संपर्क नहीं हुआ बॉल और बैट के बीच, और डॉट बॉल के साथ ओवर समाप्त। इस ओवर से आए 9 रन और रैम्पेजर्स का स्कोर बढ़कर हो गया 105 रन 7 विकेट के नुकसान पर। राम अपना बॉलिंग क्रम जारी रखेंगे। राम का तीसरा ओवर। राम ने अब तक 2 ओवरों में 15 रन दिए और 1 विकेट लिया है। सब्स्टिट्यूट फील्डर मैदान में आते हुए, लेकिन शायद अंपायर अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि फील्डर ने शूज़ नहीं पहनी है। Ram with the first delivery of his third over. Ball is in the air, played towards long off. Yeah, but just a single. Yogesh looking for a second, which is not there. This partnership is now worth 25 runs of just 16 balls. Ram, short ball, outside off. Sriharsha does well to play towards mid-wicket region and take a single to bring Yogi back on strike.
Another single there of the third ball. Three singles of the first three balls of Ram's third over. Score moves to 108 for 7. The next ball. And was that of the bat or pad? There's no one patrolling the fine leg boundary there. Yeah, it's off the pads, umpire signals 2 leg byes. Score moves to 110 for the loss of 7 wickets. 2 leg byes won't hurt Ram's figure there. Waiting for the fielder to get back to his position. Next ball, a good ball there. Slowing it up and bowling it full. Batsman going back, waiting for the ball to spin and then placing it between the point and cover fielder. Ball is once again in the air. Fielder coming under it and taken good catch. That's another very good catch. I think it's Ramandeep there. And that's the end of Yogesh on Nelson. It's 111 now for the loss of 8 wickets. Rampagers are all but done. Millennials 2 wickets away from victory. Yogesh had no option but to go for his shot. Goes across the line, heave across the line, I should say. Didn't middle the ball, and Ramandeep at deep mid wicket completes a very good catch, a well judged catch. And with that, Yogesh Sethi innings comes to an end. Yogesh made 24. Wicket of the last ball of the over, and Hemant Chilikuri has walked out to the middle in place of Yogesh Sethi, and that's Ravindra into the attack now. Second ball, another one across the line, connects with thin air, another dot. It's Hemant on strike. 2 dots to start Ravindra's fourth over. Next ball. It's in the air and straight to the man at short cover. Another catch. That's a 9th wicket down. That's Sriharsha who has to leave. He made 12 of 14 deliveries. Rather, it's Hemant who had just walked out, played couple of dots. In the third ball, he was caught by Basha Sheikh off the bowling of Ravindra. So the figure of 111 Nelson not throwing good. Just Millennials 1 wicket away from a victory in this Gold Cup final. Ravindra with his first wicket. He opened the bowling but didn't get any in his first spell. Oh, that's it. That's it. He's bowled. Very next ball. And the Rampagers inning comes to an end on the score of 111. Millennials have won this match by a mammoth 50 runs, and they have won the Gold Cup of the Ruma season 17.
Ruma Cup Season 17. That is a very happy Millennials unit there celebrating their victory. Uh, the team Rampagers losing their last 3 wickets on the score of triple one. 1-1-1. That is Rampagers in this all important final, winning the toss, deciding to field first, gave 161 runs. Uh, we have come to the end of the match. And the team Rampagers in this all important final won the toss and decided to field and restricted the Millennials to 161 for 4, which I feel on this pitch is always a very good score. So chasing 162 to win, the Rampagers could manage only 111 in 17.4 overs. So a win by 50 runs for the Millennials. Basha Sheikh is the man of the match for his 90 runs of just 63 deliveries. We'll be back with the presentation shortly.
Ready? Unmute them. What do you think went wrong today? We gave our best. Of course, you gave your best, but I think we could have done better in fielding. We could have risked it more. But they started very well. Batsmen. There were few drops and we could have excellent spinners we found in this tournament in our team. I think a lot of good new guys, especially for us, did very well. So good job of the young guns. He's going to be taking over in the next tournament also. He'll be taking over the captain. Tournament, I think very exciting pitches every match. But this was certainly up and down, but yeah, working at the same conditions. was testing for the match. That's not necessary. We have been playing this tournament for I think so many seasons now. 7 seasons we have played. I think it's compared to that. Playing a lot more. Thank you very much. And tough luck. See you in the next one. Winning captain, please. Okay, sir, you, Ravindra, he'll be speaking on behalf of the captain. So, everything going according to Like things fell in place for us, although like couple of strike batsmen have failed, but Bharat has jumped in. It was like almost batting wise, everything at the bottom of the barrel. Bowling. bowling Very like we good. had good score and each as the captain said like it is really good up and down. So like we had There was extra bounce there. stuck with down lines and no extra. So everyone was like little bit of easy work. You were good in the field as well. I don't think there were any catches The that first went time out. we haven't dropped it. So kudos to everyone. Yeah, catches in the deep were also very good. Pleasure to catches. About the positives from your team side. Positives, like we have different matches. One is starting to form up. He has made that out of match. So he has done very well. He's a big bash player. And what about the tournament in Zealand? Tournament, What's like, the we have tournament? been in this tournament.
bumpy maybe because the grass is overgrown. All the best and congratulations on the win. Thank you. Presentation for us. Wait. Okay. Today, one of our friends is leaving a business on college. You can come over, take over, please. We are arrange something. Yeah. No, I don't know, but yes. What is your overall experience? Right, I mean, see, I have joined this team 3 years back. Sir, seriously, sir. Sir, see, that is the expectation. That's where, I always have a sport, then I wanted to join some of them. So I used to play badminton and then he's our badminton player of partner also. I thought let's join cricket and I just started switchboard cricket. Took some time for me to, kind of start playing good. That's where they started sending me the opening and then somehow they wish I could make some runs. And that makes the team to win as well. After the top practice, I was not practicing. But yeah, I mean, this is friendly tournament that I have seen. Nice teams, good sportsman spirit overall. So let's hope we will get yes, we can do always. Right? Whenever there is a possibility, we would like to learn Ruma. Then we will look for other teams. Thanks for your. So we all will miss you. Yeah. Come. Wait. मेरा स्पीच खत्म नहीं हुआ है। स्पीच खत्म नहीं हुआ है। आपको अरे कुछ नहीं बोलते थे यार। हमारा नेता कैसा हो? प्यारी कैसा हो? See, I बहुत हो गया। पोलैंड में छोड़ दो उसको, पोलैंड में। To proceed with the presentation, man of the match for today's game, the final is none other than Pasha. Wicketkeeper Moin, Khan, one and only Adil, magic magician, Shashank, the dashing opener. कुछ तो बोलना पड़ेगा ना सर. हरीश कुमार, the all-rounder. भरत सेठी, yeah, excellent outfielder. ठीक है। नहीं ठीक है विनर ही है आप लोग विनर हेमंत लेग स्पिनर सर यारी सर दादू, हर्षा सर प्यारी का दादू। श्री हर्षा how's your hand Very good. Yogesh Sethi. Yogesh Sethi the one and only चलो the extras you can collect it and give to members who are present No, I think no, lovely मैंने वो सब प्रिंट करा। संजय है ना Now I request winner team captain Sandeep sir to come forward and give away the medal. Guys, come forward and collect your medals from your captain. राम कैमरा लग पूरा ना है। सुन तो सही सब लोग Badshaह Sheikh, the big match player. Akil. Mystery, yeah. Mystery spinner. Ikshana.
Ravindra. Right caller. Yeah. Partho, mainstay. Raman. Last but not least, Sandy, captain. Lovely sir. Season 17 World Cup runner-ups will be Rampagers. The two honors in Sandy. Winners will be the Millennials. Vasu. The winners. Millennials. थोड़ा ढाल के 2 मिनट हेलो आप आने